हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर पीए और पीए की वैकेंसीज निकाली थी और टोटल 127 वैकेंसीज थी, जिसमें थी 60 एसपीए की और 67 जो थी वो थी पीए की। और इनकी 6 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अप्लाई करने की डेट थी। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं उनको सबसे पहले फोकस करना चाहिए एक्यूरेट टाइपिंग पर, जो उनकी ट्रांसक्रिप्शन करने में भी हेल्प करेगी और उनको स्टेज 2 पर ले जाने में हेल्प करेगी। और साथ के साथ ही उनको इसके स्किल टेस्ट के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि चांसेस ये हो सकते हैं कि आपको बीच में गैप बहुत कम मिले। हो सकता है सेम डेट में हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर अलग भी हुआ तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। इसलिए स्टेनोग्राफी की तैयारी करना अभी से बहुत ज़रूरी है। और नेचुरली दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है तो प्रोसेस भी उनकी स्लो नहीं होगी। एक रीज़नेबल टाइम देकर वो आपको नेक्स्ट टेस्ट जो है बुलाएंगे। आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि लीगल पैसेजेस भी करिए और जनरल पैसेजेस भी करिए। मेरे चैनल से, किसी भी चैनल से कर सकते हैं आप। जनरल पैसेजेस भी बहुत हैं डिफरेंट मैगजीन से, और लीगल पैसेजेस पहले भी हैं और ये मैं और भी दे रहा हूँ। इसमें आउटलाइंस जो हैं दी तो हुई हैं, लेकिन आप जिस भी आउटलाइन को अडॉप्ट करना चाहें आपके अपने ऊपर है। जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको एक्यूरेसी की तरफ ले जाए, उसी को करिए। नई तब करिए अगर आपको समझ आ सके, आप उसको प्रॉपरली अडॉप्ट करके यूज़ कर सके। मेरी अगर माने तो डेली डिक्टेशन करिए, कोई सी भी करें, लेकिन उसको आप ट्रांसक्राइब ज़रूर करें, और वो भी कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करें। और प्रेफरेबली आप उसका प्रिंट लें और ख़ुद चेक करें, ताकि आपको मिस्टेक्स रियलाइज़ हों। कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है इसमें फोकस एक्यूरेसी पर होता है। आपने देखा है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक एक मिस्टेक जो है अगर हम करते हैं तो हमें पीछे की ओर ले जाती है। तो आपको केयरफुली करना है, नंबर पर नहीं जाना कि मैंने ज़्यादा करने हैं पैसेजेस, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आप जितना सॉलिड और जितना डिटेल्ड में किसी चीज़ को कर पाएँ वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जहाँ आप समझें कि आपको मीनिंग देखना है तो मीनिंग ज़रूर देखिए, क्योंकि जब हम मीनिंग देखते हैं तो वर्ड हमारे लिए आसान हो जाता है, और उसको टेक्स्ट से जब रिलेट करते हैं तो और भी आसान हो जाता है। तो ये करने से आप अपने आप को डेवलप करते हैं और अपने आप को और कॉम्पिटेंसी में बढ़ाते हैं। तो अब मैं डिक्टेशन शुरू करता हूँ। Please get ready for dictation of a legal passage. 5 seconds. Start. The doctrine called promissory estoppels, equitable estoppels, quasi estoppels, and new estoppels is a principle evolved by equity to avoid injustice, where a promise is made by a person knowing that it would be acted on, and it is person to whom it is made, and in fact it is so acted on, and it is inequitable to allow the party making the promise to go back upon it. Though commonly named promissory estoppel, it is neither in the realm of contract nor in the realm of estoppel. The basis of the doctrine is the interposition of equity, which has always, true to its form, stepped in to mitigate the rigors of strict law. The true principle of promissory estoppel is that where one party has by his words or conduct made to the other a clear and unequivocal promise which is intended to create legal relationship, effect a legal relationship to arise in the future, knowing or intending that it would be acted upon by the other party to whom the promise is made, and it is in fact so acted upon by the other party, the promise would be binding on the party making it, and he would not be
entitled to go back upon it if it would be inequitable to allow him to do so, having regard to the dealings which have taken place between the parties, and this would be so irrespective whether there is any pre-existing relationship between the parties or not. Equity will, in a given case where justice and fairness demand, prevent a person from insisting on strict legal rights even where they arise not under any contract but on his own title deeds or under statute. To the applicability of the doctrine of promissory estoppel, it is not necessary that there should be some contractual relationship between the parties, nor can any such limitation, namely that the doctrine of promissory estoppel is limited in its operation to cases where the parties are already contractually bound and one of the parties induces the other to believe that the strict rights under the contract would not be enforced by justifiably introduced to curtail the width and amplitude of the doctrine. The parties need not be in any kind of legal relationship before the transaction from which the promissory estoppel take its origin. The doctrine would apply even where there is no pre-existing legal relationship between the parties, but the promise is intended to create legal relations or affect a legal relationship which will arise in future. The doctrine of promissory estoppel cannot be inhibited by the same limitation estoppel in the strict sense of the term. Stop.